Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter 15, sampling distribution is under discussion today, lecture number 10. And the second topic of this chapter is sampling distribution of difference between two sample means x1 bar minus x2 bar. In this lecture, students, only I will discuss notations, formulas and verifications formulas. Now students, kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the topic. Sampling distribution of difference between x1 bar minus x2 bar with notations, formulas and verifications formula. Now in the contents of this lectures, at the first point I will discuss formation of sampling distribution of difference between two sample means x1 bar minus x2 bar. In the second point I will discuss population notations with formulas. In the third point I will discuss the formulas for mean, variance and standard error for sampling distribution of x1 bar minus x2 bar. And the last point I will discuss the verification formulas for mean, variance and standard error for the topic is sampling distribution of x1 bar minus x2 bar. First point is formation of sampling distribution of difference between two sample means x1 bar minus x2 bar. Now steps involved in formation of sampling distribution of difference between two sample means x1 bar minus x2 bar by sampling with replacement or without replacement using sample sizes n1 and n2 as first of all, draw all possible samples of size n1 and n2 by sampling with replacement using formula n1 power small n1 or without replacement using formula ncn from the given populations 1 and 2. दो पॉपुलेशन स्टूडेंट्स आपको गिवन होंगी पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2 और आप लोग ड्रॉ करेंगे सैंपल्स ऑफ साइज n1 यूजिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट एंड सिमिलरली सैंपल ऑफ साइज 2 बाय सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट. Then find the sample means x1 bar and x2 bar of each samples. In the second step, make the differences x1 bar minus x2 bar using sample means x1 bar minus and x2 bar as find in step 1. Step 1 के मीन्स को आप लोग एज इट इज यूज करेंगे और फाइंड करेंगे डिफरेंसेस x1 बार माइनस x2 बार. इन द थर्ड स्टेप प्रिपेयर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सैंपल मींस x1 बार माइनस x2 बार. डिफरेंस ऑफ मींस के लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स प्रिपेयर करेंगे और देन फाइंड इट्स मीन, वेरिएंसेस एंड स्टैंडर्ड एरर फॉर दिस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार यूजिंग फॉर्मूलाज. इन द फोर्थ स्टेप नाउ स्टूडेंट्स हम बोथ पॉपुलेशंस के लिए कैलकुलेट करेंगे मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन 1 एंड 2 एंड इन द लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स वेरीफाई करेंगे रिजल्ट्स यूजिंग वेरिफिकेशन फॉर्मूलाज फॉर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मींस x1 बार माइनस x2 बार. In the second step I will discuss population notations and formulas. In this step I will discuss the mean, variance and standard deviation formulas for the population 1 and population 2. Population 1 size is denoted by capital M1 and population mean for the first population is denoted by mu1 equal to summation x1 or divided by n1, and population variance is denoted by sigma 1 square equal to summation x1 minus mu1 ka whole square over n1. This is the by definition formula for the variance and the short form is summation x1 square over n1 minus summation x1 over n1 का whole square, and the population standard deviation is the positive square root of the population variance. And for the population 2 is denoted, size is denoted by n2, capital N2 से denote करेंगे population size 2 को, and population mean जो है for the second population is denoted by mu2 summation x2 over n2, and population variance is denoted by sigma 2 square same as summation x2 minus mu2 का whole square over n2, and the short form is summation x2 square over n2 minus summation x2 over n2 का whole square, and population standard deviation is also the positive square root of the population variance. These are the formulas of the mean, variance and standard deviation for population values population 1 and 2. Now in the third step, mean, variance and standard error formulas for the sampling distribution of x1 bar minus x2 bar. At this point I will discuss mean, variance and standard error formulas for the sampling distribution of difference between two sample means x1 bar minus x2 bar. And first of all I will discuss the formula for mean of sampling distribution of x1 bar minus x2 bar. It is denoted by
म्यू x1 बार माइनस x2 बार। x1 बार माइनस x2 बार के लिए हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको आपने राइट करना है सबस्क्रिप्ट में मीन के, और इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, और आपने इसको एक्सपेक्टेशंस को अपने ओपन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने राइट करना है समेशन, देन आपने राइट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू में आपने राइट किया है x1 बार माइनस x2 बार, और इसको अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। f of x1 bar minus x2 bar, this is the probability of f of x1 bar minus x2 bar। वेरिएंस के लिए स्टूडेंट्स जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर x1 बार माइनस x2 बार, इसको डिनोट करेंगे सिग्मा स्क्वायर, और सबस्क्रिप्ट में आपने राइट करना है x1 बार माइनस x2 बार। इट इज आल्सो डिनोटेड बाय वेरिएंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, और आपके पास जो फॉर्मूला जनरेट होगा वेरिएंस के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला है जैसे हम लोगों ने सिंपल सिंगल मीन के लिए यूज किया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार का होल स्क्वायर। और आपके पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर जो है इसको आप लोग फाइंड करेंगे यूजिंग समेशन x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर, और साथ इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। तो ये इस तरह से आपने एक्सपेक्टेशंस को ओपन करना है समेशन साइन, देन फिर आपने राइट करना है जो भी आपके पास एक्सपेक्टेशंस के अंदर राइट किया गया है, और उसको अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपके पास थर्ड पे हमने डिस्कस करना है स्टैंडर्ड एरर को। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार को आपने सेम राइट करना है सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार से डिनोट करेंगे, और इसको स्टैंडर्ड एरर कहेंगे x1 बार माइनस x2 बार के लिए, और आपने स्क्वायर रूट यूज कर देना है अपने वेरिएंस के फॉर्मूला के अंदर। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर माइनस साइन, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। तो दीज आर द फॉर्मूलाज जो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर x1 बार माइनस x2 बार के लिए, और मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करेंगे। Now in the last point I will discuss the verification formulas for mean, variance and standard error for the sampling distribution of x1 bar minus x2 bar। Verification formulas for sampling distribution of difference between two sample means x1 bar minus x2 bar। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किए हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के लिए, और राइट साइड पे सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। फर्स्ट वेरिफिकेशन इज सेम एज फॉर बोथ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। मीन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, लेफ्ट साइड पे हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मीन को कैलकुलेट करेंगे, और इसको इक्वल प्रूफ करना है आपने डिफरेंस ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स, फर्स्ट पॉपुलेशन मीन μ1 एंड μ2। सेकंड आपके पास वेरिएंस के लिए है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस साइन सिग्मा 2 स्क्वायर और n2 फॉर विद रिप्लेसमेंट। और आपके पास स्टैंडर्ड एरर जो है सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार, और इसको हम लोग स्क्वायर रूट को यूज कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर और n2। और फॉर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए वेरिफिकेशंस जो है यूज करेंगे मीन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इक्वल टू μ1 माइनस μ2 which is same as sampling with replacement। और सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार में हम लोग ऐड कर देंगे अपना एक फैक्टर जिसे हम लोग FP से फैक्टर यूज करते हैं फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट प्रोसेस के लिए। जब आप लोग सैंपल्स ड्रॉ करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से, तो आपने FP फैक्टर्स को ऐड कर देना है इसके साथ, और ये मल्टीप्लाई होगा सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 के साथ, और प्लस साइन सिग्मा 2 स्क्वायर और n2 के साथ भी इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे n2 माइनस n2 ओवर n2 माइनस 1। और देन आपके पास लास्ट वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, और इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार, और ये आपने स्क्वायर रूट यूज कर देना है, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 इंटू n1 माइनस n1 ओवर n1 माइनस 1 प्लस साइन सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 इंटू n2 माइनस n2 over capital N2 minus 1 with square root। So these are the verifications formulas for sampling with replacement and without replacement, और इसको हम लोग verify करेंगे in last step के अंदर for sampling distribution of difference of two sample means। In this lecture, all steps, notations, formulas and verification formulas are discussed for the sampling distribution of difference between two sample means। इंशाल्लाह students, next lecture में आपसे मुलाकात होगी next topic के साथ।
अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।